This conference will now be recorded. Yeah, this is our ESXi host that we installed, and I'm just going to turn on. अभी देखिए आप यहाँ पर CPU usage जो है ना, we just need to we are consuming only 39% of processor and 8% of memory. So what I'm going to do, turn on our VCSA 7 that I installed. This is our vCenter server, and I hope you know about the features that contained by the vCenter server, right? Yeah. So with the help of vCenter server, we are able to manage and protect our environment. Like it will give us option to for kind of upgradation. Means if you want to upgrade our ESXi host or vCenter server, with the help of vCenter we are able to do that. तो upgrade का भी हम लोग task perform करेंगे. ESXi 7.0 से 8.0 पे, ESXi 7.6 से 6.7 से 7.0, like that. Multiple options यहाँ पे अपने पास available हैं, right? Right. We are able to find, we successfully turn on our system vCenter server. इसमें हमने जो मेमोरी प्रोवाइड कर रखी है 11 पॉइंट समथिंग के आसपास से हमारे इस पर्टिकुलर ESXi पर्टिकुलर vCenter सर्वर को हमने रैम प्रोवाइड कर रखा है एंड अबाउट द प्रोसेसर कंटेनर 2 core of processor core i3. We are getting two IP address, right? Two way to connect our vCenter server. One is https vcsa7.class.com colon 5480. This is the code or logical number that help us to open the management center of our vCenter. और दूसरा है अपने पास 443 जिसकी आईपी एड्रेस है 235. इज दैट ओके? Yeah. vCenter सर्वर को हम दो तरीके से एक्सेस कर पाते हैं. पहला जो ऑप्शन है वो है मैनेजमेंट सर्वर, मैनेजमेंट पोर्टल, और दूसरा जो ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री. बट हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज यू नो दैट सीपीयू कंजप्शन इज 100%, क्योंकि जब स्टार्टिंग में vCenter सर्वर को टर्न ऑन करते हैं ना, इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ स्पेस. तो फॉर बेटर प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस व्हाट वी नीड टू डू, कभी भी हम ट्रेनिंग के केस में जो सेटअप बनाते हैं ना, तो वी ऑलवेज सस्पेंड द मशीन. हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉज कर देते हैं. Okay. जिस भी सिचुएशन पे हमारा vCenter सर्वर है उसी पे हम पॉज कर देंगे, देन टर्न ऑफ द कंप्यूटर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लॉग इन करें ना तो वहीं से हम उसको टर्न ऑन कर सकें. इज दैट करेक्ट? Right. Yeah. ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देन प्रोसीड टू एक्सेस अवर vCenter सर्वर. पहले हम मैनेजमेंट के पोर्टल को देखेंगे एंड देन डिस्कस अबाउट द inventory, how to set up our, how to configure our server through the inventory. The domain controller that I established and same domain controller I used to install vCenter server. Our domain information, sorry, vCenter server information I have already filled in our preferred DNS and the forward lookup zone and reverse lookup zone. Okay. Let me try to open our vCenter server. https vcsa7.class.com colon 5480. It's here. So This is for management. 5480, it will redirect you on page of management, right? Yeah. मैनेजमेंट का पोर्ट पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है, आपके इन्वेंट्री का पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है. इट्स डिपेंड अपॉन यू. ठीक है? Yeah.
इंस्टॉलेशन के टाइम पे इट विल आस्क यू कि आपको मैनेजमेंट का पासवर्ड क्या रखना है और इन्वेंट्री का पासवर्ड आपको क्या रखना है. दिस इज द इन्वेंट्री. और इन्वेंट्री का जो डिफॉल्ट यूजर नेम रहता है ना वो है Hmm. रूट अकाउंट. इज दैट करेक्ट? Yes. And inventory password and sorry, the default user for management portal is root, and default user for inventory is vSphere.local. I think vSphere administrator @vSphere.local. Is that correct? एक मिनट. So root is the default Default username for management. management portal. Hmm. Administrator @vSphere Hmm. for inventory. So we cannot do inventory with the root user. No. We are able to use the root account only for the troubleshooting Just for purpose. management. Okay. फॉर मैनेजमेंट फॉर एसएसएच पुटी से Hmm. एक्सेस करते हैं तो उसके लिए रूट का यूज करेंगे आप. एंड मैनेजमेंट पोर्टल ओपन करते हैं तो उसके लिए रूट का इस्तेमाल करेंगे. वी आर नॉट ऑथराइज टू मेक एनी चेंजेस रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन क्लस्टर DRSHA विद द हेल्प ऑफ Hmm. रूट. उसके लिए आपको एडमिन की हेल्प लेनी पड़ेगी. बिकॉज व्हाट हैपन जब Got it. आप वी सेंटर सर्वर स्टैब्लिश करते हैं ना तो इट विल क्रिएट अ Hmm. डेटाबेस. ये डेटाबेस क्रिएट करता है और डेटाबेस मस्ट बी एसोसिएटेड विद आवर डोमेन कंट्रोलर. डोमेन में इशू है तो वी आर अनेबल टू सिंक्रोनाइज द इन्वेंटरी सर्विसेज एज वेल. ठीक है, Okay. फाइन. We are able to find summary. So the meaning of summary, it will give you the information about the status of your hardware, the status of hardware plus including the kind of, you can say that information about the uptime and the version that you are using. तो यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके. सीपीयू भी, मेमोरी भी, स्टोरेज भी, डेटाबेस भी Hmm. एंड स्वैप मेमोरी भी, एवरीथिंग इज ओके. कहीं पे कोई एरर नहीं आ रहा है, राइट? Sometime in terms of troubleshooting, what happen, everything is okay, but कभी कभी ना ये डेटाबेस एरर दिखा देता है. Hmm. डेटाबेस फेल्ड, यहाँ पे गुड दिखा रहा है स्टेटस बट डेटाबेस Hmm. फेल्ड दिखा रहा है. तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है आपके इन्वेंट्री पे. बराबर. If we are unable to perform the task, entire options which are available on our inventory, so you must need to open our management portal or vCenter management portal के through you need to verify that your database is active and healthy and working properly. Got it. If it is display error or failed or connectivity issue, it means Hmm. that we need to maintain our database again. Okay. Is that okay? Yeah. Okay. Second important point is related to the monitor. तो जाहिर सी बात है, if you want to Yeah. see the information about your CPU, RAM or network usage in format of graphic, you can check it. यहाँ से आप verify कर सकते हैं कि आपका जो consumption है प्रोसेसर का वो कितना जा रहा है, RAM क्या है, status क्या है, and disk का status क्या है या फिर network का status क्या है. यहाँ से हम monitor कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है. Hmm. Another point is access. आपने क्या क्या चीजें इसमें enable कर रखी है. It will provide you the complete information. Like यहाँ पे हमने SSH activate कर रखा है, enable है, TCUI enable है, console का CLI enable है, but bash shell ये disable कर अभी available है, क्योंकि ये जो bash shell है ना, you need to activate through the DCUI panel. आप DCUI में जाकर के इसको check कर सकते हैं. We are able to manage it with the help of management portal. अगर आपको management portal से करना है, just need to click edit option और यहाँ पे आप अपने किसी भी सर्विस को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं विद इन सिंगल क्लिक. Right. इज दैट ओके?
Yeah. Fine. Access. As it is, we have a network option that give you the information about your lodge, the IP address that you configured in your physical adapter, जो आपके NIC कार्ड, जो आपका ESXi के थ्रू जो NIC कार्ड, ESXi में जो NIC कार्ड कनेक्टेड है ना, उसकी Hmm. कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप यहाँ से नेटवर्किंग से मैनेज कर सकते हैं. इवन वी हैव ऑप्शन टू मेक अ चेंजेस, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं इफ यू हैव अ मल्टीपल NIC कार्ड, Yeah. राइट. इफ यू हैव, If you do next, the screen will be black. See, we can't see anything. In edit setting, screen will be black. okay, so we Is haven't installed SSH. See, okay. SSL नहीं install अभी ना, we are Ah, unable to access each and every services. okay. We must need to configure the certificate for your Okay. domain, Hmm. install, and then try to use it. Got it. We are using the port number 80. We are using the services using port number 80. That's why. Firewall, we haven't configured any kind of firewall. If you want to add the firewall rules, you can do that. Hmm. This is the time synchronization with host, NTP. Number of services which are available, healthy, started, stopped, every information are available in our services. We are able to find update. If you want to update your vCenter server, यहाँ से हम जो भी latest patches आएंगे, you can just directly click on the patch and it will redirect you on page of upgrade option. Clear? Clear. This is related to the vCenter server, not for ESXi host. ESXi के लिए आपका life cycle management ही हमारी help करेगा. Okay. This is the administration panel where we can find that n number of options are available. The first one is password. Means if you want to reset your password, change your password. So we just need to open administration panel and click on change. It will give you the option to change your change your password. Clear? Clear. This is another panel where we can set the expiration setting, the kind of password policy आप बोल सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे Hmm. अपने पास एक पासवर्ड पॉलिसी है जिसकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो द एज ऑफ योर पासवर्ड, कितने दिन तक के लिए हमें पासवर्ड को यूज करना है, कितने दिन तक, कितने टाइम के लिए हमें पासवर्ड रखना है. इज दैट ओके? Yep. Next, sys log that help us to check the logs related to our system. Okay. And last option is kind of backup, right? So we are able to perform the task of backup. If you want to configure the backup, we have a various protocol that help us. आप पूरे vCenter server का backup configure कर सकते हैं. And about the supported protocol, so ये जितनी भी list दिखाई पड़ रही है ना, these all are the Hmm. supported protocol. FTP पे configure कर रखा है आपने, share folder बना रखा है, HTTPS या NTFS folder share कर रखा है, तो you just need to provide the path. Got it. आपको उस लोकेशन का पाथ प्रोवाइड करना है, उस मशीन का यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है, एंड देन create a encrypt password and then start. You can also proceed to schedule the backup. मतलब ठीक है? ये बैकअप जो करेगा, that's it does the only the vCenter configuration, right? हाँ, हमें कॉन्फ़िगरेशन की ही नीड रहेगी ना. Right. It will take the backup of complete vCenter server, जो भी उसमें Yeah. चेंजेस या सेटिंग्स आपने कर रखी है ना, Hmm. Hmm. वो करंट स्टेज ऑफ आवर vCenter vCenter server, server. Got it. उस करंट सेटिंग्स की सारी इंफॉर्मेशन की एक ये कॉपी बना करके दूसरी लोकेशन पे स्टैब्लिश कर देगा, जहाँ पे भी Hmm. आपने शेयर फोल्डर बना रखा है या फिर शेयर स्टोरेज स्टैब्लिश कर रखा है, उनका केवल आपको पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट? Yeah.
सो विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. हम एक यहाँ पे शेयर स्टोरेज वगैरह बना करके इसको चेक कर लेंगे. ठीक है, Yeah. फिर रिस्टोर, क्योंकि अभी तो हमने बी सेंटर में कोई चेंजेस ही नहीं किए. विल मेक अ Mm. चेंजेस, डीबी वगैरह बनाना, क्लस्टर बनाना, ठीक है ना, HDRs कॉन्फ़िगर करना, देन विल Mm. टेक द बैकअप और उसके बाद रिस्टोर करके देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं या नहीं. ठीक है, Yeah. दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर vCenter सर्वर मैनेजमेंट पोर्टल. ठीक है, यहाँ पे गए, Mm. एक्शन पे कुछ और ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, विच इज रीस्टार्ट, शट डाउन या स्विच थीम. It- तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. एंड वी हैव अ रूट अकाउंट जिसको हम लॉग आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. Mm. ओके, लेट्स मूव आवरसेल्फ टू द, अब हम यहाँ पे ओपन करते हैं इन्वेंट्री को. Mm. 443 5480 you open. Default user name for our vCenter inventory, admin@vsphere.local. This is the inventory of our VCSA vCenter server जो हमने establish किया था. And we haven't created any kind of data center क्योंकि ये fresh server था, हमने उसमें कोई changes नहीं किया. Now we need to proceed from the scratch. तो this is the inventory. ये basically क्या है, अपने पास inventory है, which are categorized in 3 different parts. पहला है inventories that help us to manage our vCenter services. दूसरा है monitoring, which is responsible to manage the troubleshooting and kind of monitoring system. And last one is administration, जिसमें हम licensing के बारे में बात करेंगे कि how we can configure the license for our VCSA or ESXi environment. Clear? Yeah. Under the inventory, we are able to find cluster and host, virtual machine and template, storage and networking, and storage networking, content libraries, global inventory list, and last है workload management and cloud provider migration. जितने भी लेटेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें, दे ऑल आर Mm. मेकिंग अ चेंजेस विद आवर पोर्टल, विद देयर पोर्टल, जहाँ पे हम डायरेक्टली सर्विस के थ्रू अपनी रिसोर्सेज को, वर्चुअल मशीन्स को या किसी भी सर्विस को माइग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने क्लाउड के पोर्टल पे. इट मे बी एज्योर, इट मे बी गूगल क्लाउड और अमेजन वेब सर्विसेज, कहीं पे भी हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं, रिसोर्सेज को माइग्रेट कर सकते हैं. राइट, Yeah. वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, लाइक होस्ट एंड क्लस्टर से चलते हैं. वी हैवंट क्रिएटेड एनी होस्ट एंड क्लस्टर. अभी हमने ना होस्ट डिस्कस किया है ना क्लस्टर के बारे में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की. तो वी जस्ट नीड टू राइट क्लिक ऑन आवर VCSA. इट विल प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे आप देखें, Mm. वी आर एबल टू फाइंड अ न्यू डेटा सेंटर, and second option is new folder, Mm. export logs, assign the license, attributes, add permissions and alarm. ये सभी options हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं. So I'm going to proceed with what is difference between data center and folder. New data center means collection of our ESXi host. Okay, what about folder? Folder. Oh, no idea about folder. Okay, so most of organization, if we talk about our in case of production environment, ठीक है, तो basically क्या होता है, just give me.
इन केस ऑफ vCenter सर्वर मैनेजमेंट बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, they want to set up a virtual environment for multiple departments. ठीक है, Hmm. Hmm. फॉर एग्जाम्पल एक कोई कंपनी है विद नेम ऑफ एबीसी के नाम से. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इस्टेब्लिश मल्टीपल डिपार्टमेंट. अभी हम डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, मे बी डिफरेंट फर्म्स हो सकती हैं उसी का ऑनर का. वी हैव अ एचआर and another department like as a sales, sorry IT, और एक सेल्स डिपार्टमेंट है. Client want to control the resources virtual machine of HR, IT and sales एक ही vCenter सर्वर से हैंडल करना चाहता है. But he want to set up a ESXi, 3 ESXi for HR, 2 ESXi IT के लिए अलग से, Hmm. और 2 ESXi सेल्स डिपार्टमेंट के That's लिए. good. क्लियर? Hmm. And he wanted to configure each and every ESXi with different permissions. यहाँ पे हमने vCenter server establish किया. This is the vCenter server. We have only single vCenter server. ठीक है? We have only one vCenter server. And you wanted to control separately for HR. इसी vCenter server से अलग अलग services IT के लिए. And by using the same vCenter server, you wanted to configure these two different ESXi. आप चाहते हैं कि जो सेटिंग हम इस पे अप्लाई करें ना vCenter से, वो आपके आईटी पे इम्पैक्ट ना करें. जो Hmm. सेटिंग्स आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे आईटी और एचआर Which किसी will के be. ऊपर ना पड़े. गॉट इट व्हाट Yeah. आई एम सेइंग? Yeah. अगर आप इस केस में इफ यू पुट द एंटायर ESXi इन सेम डेटा सेंटर, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू सेग्रीगेट द पॉलिसीज. Yeah. If you proceed and create data center and added entire ESXi host that we have for different uh, डिपार्टमेंट Deployments. लाइक तीन तीन आपने इसको दे दिया, और ये सभी आपने ESXi को एक ही डेटा सेंटर में ऐड किया. ठीक है, The same अब डेटा policies सेंटर, apply. हाँ जो भी चेंजेस हैं वो आपके सबके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे. Right. सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू टू सेग्रीगेट द पॉलिसीज, आपको एक फोल्डर बनाना है Hmm. HR के नाम से. Hmm. अगला फोल्डर क्रिएट करना है विद नेम ऑफ IT. So we can create the folder in data center itself, right? No, not data center. We can create a data center under the folder. Okay, because you draw the line under the data center. That's why. Sorry, it's associated to BCSA. Yeah. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद माय मैक मशीन. अभी 2 दिन पहले मैंने इसको क्लीन किया और पूरी तरीके से रीसेट किया सारे डेटा उड़ा करके, बट आई एम Hmm. अनेबल टू गेट एनी काइंड ऑफ स्पीड. सेम मीन्स जैसे पहले थी वैसे ही स्पीड इसकी है. सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इस पैनल पे जब पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं ना, विच इज़ रियली डिफिकल्ट. लिखो कुछ और लिख जाता है इसमें. Now, so you need to create a folder under vCenter VCSA, server. vCenter. अब vCenter सर्वर के अंदर, ठीक है, अंडर द vCenter सर्वर अब आप डेटा सेंटर बनाएंगे. Okay. ठीक है ना. अब डेटा सेंटर आप ऑनर है, कैसा भी यूज करिए, उसके अंदर क्या सर्विस देनी है क्या नहीं देनी है. DC1, DC2 एंड DC3. ठीक है, लाइक दिस.
Is that clear about Yeah, what got we it. discussed? ठीक है. Okay, so यहाँ पे फोल्डर बना दिया. For example, only for testing purpose. IT डिपार्टमेंट के लिए हमने एक फोल्डर क्रिएट किया. Under the IT department, जब राइट क्लिक करोगे ना, it will again give you option New create another direction. folder या फिर डेटा सेंटर बनाना है हमें. ठीक है. Hmm. क्लास DC हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया. As it is, I'm going to create another folder with name of sales and sales PC. अब जो परमिशंस हम इनको प्रोवाइड करेंगे, सेल्स डीसी को जो परमिशन देंगे या क्लास डीसी को जो हम परमिशंस देंगे, वो परमिशन सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर ESXi के लिए होगी जो ESXi उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर के पार्ट है. इज दैट करेक्ट? Yes. दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ आवर फोल्डर. ठीक है, लेट्स मूव. क्लास पे हम ऐड करना चाहते हैं होस्ट को. वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर. 1.15 next. Username and password, because we have only one ESXi host. I am going to create one more ESXi. एक और ESXi यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम मैनेज कर सकें सर्विसेज को. Fine. So we successfully added ESXi host to DC. और इसके अंदर ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल वर्चुअल मशीन. VCS से भी इसी का पार्ट है एंड we created a virtual machine Windows 10 and Windows 11 as well. Hmm. Right? Right. So let's start from the very basic, like as the part of vCenter server. अभी तो कुछ टास्क हम परफॉर्म कर पाएंगे सिंगल ESXi से, बट नॉट मच. हमें दो ESXi लगाना पड़ेगा, शेयर स्टोरेज लगाना पड़ेगा to perform the another important task. Correct? Right. Okay, so I'm going to start from the very basic, like as we have a Windows 10 machine. So I think it already contained the operating system. Let me verify. I don't think so. Install किया लगता है. I think install नहीं है. I need to identify. मैंने कुछ ESXi में virtual machine का OS इंस्टॉल किया था. Let me verify. In Windows 8.
नहीं किया लगता. Mhm. We haven't installed, so we need to install one operating system. Okay, we need to install it because I wanted to show you the step to configure clone and template. I hope you know about the usage of these two different important options which are available in our vCenter server, right? Which one? Clone and template, na? Clone and templates. Yeah. Yeah. Okay. May I know the usage of these two important services means why we need to use it in real environment? Clone, if you want to exact copy of the virtual machine, then we use clone. And template is the identical copy, or you can say uh, master copy of the virtual machine. We can create a multiple instance from that machines template using that template. Okay. So whenever we try to create a master copy of our virtual machine, we can proceed with template. और हम Hmm. अपने VM को template में convert कर देंगे. Whenever we required, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम वहां से template में से virtual machines को create कर देंगे. Is that correct? Yes. ठीक है. So do we need to reconfigure the computer after taking the clone और template बनाने के बाद we need to reconfigure the machines? Uh, uh, if we do the clone, we need to run sysprep, Hmm. and in template, uh, yes, in template too. Exactly, because you are making a Yeah. copy. बेस तो मशीन एक ही है ना हमारे पास virtual machine we Yeah. have only single virtual machine and we are just taking the copy of same computer so definitely it will copy the entire information from your base machine. It may be computer name, MAC address, IP address, right? Yes. So it will create another copy of same SID, what we can say AV, that yeah, everything will be yeah, same. SID, IP, सब तो clear. Hmm. Fine. So about the procedure to create a clone and template, we just need to right click on virtual machine और ये option दे देगा to create a clone and to create a template, right? Right. ठीक है. So we just need to click on clone. It will redirect you on another page. We are able to find Hmm. multiple options. Clone to virtual machine, clone to template, clone as a template to library. Can you please explain me the usage of three different options? Clone to virtual machines. Clone to template. Clone as template to library. Clone to virtual machine means एक इसका clone बना के नया virtual machine create करेगा. It will impact to our existing virtual machine. No. Existing VM पे कोई impact पड़ेगा इसका? No. Okay. Second, Clone to template, it uh, ये confusion वाला clone to template. So it will create a clone as well as template, both. I don't get it. So clone to template option. No idea about the clone to template. Or it will convert just clone to template. mhm. I'm not sure about that. Okay. So if you want to convert your machine to the template, we just need to proceed second option. And
Third The option is template, clone as a template to library. we have the template option, right? So why is there clone to template? No, clone to template means Oh yeah, from existing machine to creating template, right? right, right, right. Okay, got it. Yeah. And that template is we are creating the new one as a template, master copy. Correct. And clone as template to library. We So have it will, option to set up a library. अपने पास एक library का option रहता है, right? जिसमें template store रहता है, right? हाँ, where we can store template, virtual machine, Hmm. and ISO image. ठीक है ना? Multiple things we are able to uh, put it into the template. Sorry, library. ठीक है? Yeah. Okay, so if you want to create a clone, just need to proceed with this option. And one more question just wanted to add. Are we able to migrate our virtual machine? For example, clone हमारा जो है VM जो है वो ESXi 1 में है and I wanted to create a clone and put it into the ESXi 2. तो ये possible है क्या? Hmm. Possible तो है, Mm-hmm. but right now I think we need to configure ESXi2 and in the same data center. Okay, virtual machine must be a part of same data center you're talking about. No, ESXi must be the same in the same data center. Both ESXi, let's say it's an ESXi1 and ESXi2 must be in the same data centers. No, ESXi must be in same data center or virtual machine because we are able to connect our ESXi data center को तो हम ESXi में ही ऐड करते हैं ना. Hmm. So VM should be a part of data center or ESXi. ESXi. How we can add our ESXi to data center? We just right click on the data center and add host ESXi host and give the IP address to add the host in the data center. Mm-hmm. Your question is right? How to add the ESXi host in the data center? Is it your question? Yes, see, data center, I'm sorry, not data center, I'm talking about the data store. Oh, data store. You see. Okay. So my question is, for example, we establish two different ESXi in same data center, okay? Hmm. Same VCSA and same data center. We establish, this is our VCSA 7, and under the VCSA 7, we establish one data center, maybe with name of class DC. In the class DC, we added two different ESXi hosts, ESXi host 1 and ESXi host 2. Hmm. Okay, and each and every ESXi contain multiple virtual machine. यहाँ पे भी कुछ instances हैं. We created few instances in ESXi host 1 and few instances are available in ESXi host 2. ठीक है? Okay, I Like got your question and answer too. So if we want to create a clone of ESXi one virtual machines, so on ESXi2, then both ESXi should be set on shared storage and sharing the same data store.
if we are using local storage, then we are able to configure our ESXi, sorry, um, clone and put it into the different ESXi host. Local storage के case में, नो, लोकल स्टोरेज के केस में नहीं होगा ना. we are not migrating ना, we are not migrating. Migration के case में आपका share storage की need पड़ती है. I don't think in case of clone we need to use share storage. Then how do the ESXi2 use the ESXi1 local storage? Okay, see, this is our for example the virtual machine one and using the local storage. यहाँ पे जो local storage है ना उसी का इस्तेमाल कर रहा है. ESXi2 usage contain only the our own storage. Local storage ही इसके पास भी available है. I'm going to proceed to create a clone. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको clone में convert किया. And I wanted to put the clone copy in second ESXi. ठीक है, I wanted to put the clone of Copy. our virtual machine to second ESXi. We are able to do that, right? Yes. Local storage है. Still we are using local storage. Yeah. दोनों में local storage. We don't have a share storage. अभी हमने share storage को configure ही नहीं किया. We can do that. Yeah, we can. So we need to give the just part for the when we create a clone. Second ESXi host की जो local storage का जो part है वो ही देना पड़ेगा, right? Correct. Done. No need to provide the path. ये automatically pick कर देगा. So let's try to understand about the usage of clone and ये task perform करके देखते हैं. ठीक है? Yeah. For that we need to install one more ESXi. So I'm going to proceed and install one more ESXi host. ESXi2 यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं. I wanted to put into local storage. 80 gig enough. C drive में है space. Yes, we have enough space. Let me change it and put it into the 115 gig. 115 gig space अवेलेबल है. मैंने भी SSD लगाई 500 GB की. Okay. प्राइस इसका लो हो गया ना अभी तो. हाँ. 2100 या 2200 में 500 GB मिल गया. Good. और 2 साल पहले मैंने परचेज की थी एक SSD 1800 की 140 GB की. 1800 का. तब तो ऐसा था जिसके मन में जो भी रेट आया वो मार लो. हाँ, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी. मैंने डेल मशीन में लगाया था. डेल थिनपैड था, सॉरी लिनोवो थिनपैड में. मींस उसका मीन
8 GB, सॉरी 16 GB रैम थी, ओल्ड मैंने खरीदी थी सेकेंड हैंड। एसएसडी लगाने के बाद इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़िया हो गया। काफी बैचेस तो मैंने इसी 16 GB थिन पैड पे निकाले थे। ओके, सॉरी, दिस इज कंसीडर्ड एज ए पीएसओडी, पर्पल स्क्रीन ऑफ डेथ। पर्पल स्क्रीन पीएसओडी, मतलब पीएसओ रैम, मींस? हाँ, पर्पल स्क्रीन, एक बीएसओडी होता है ना, एक पीएसओडी होता है। ओके रैम अगर 4 GB से कम है तो ये पीएसओडी आ जाएगा। ओके। मैंने vCenter सर और ESX ये वर्चुअल मशीन पे भी VMware वर्कस्टेशन पे भी इंस्टॉल करने की ट्राई की, लेकिन हुआ नहीं। vCenter सर्वर, ये ओके, ESXi के अंदर ही, राइट? ESXi में तो हो गया, लेकिन ये जो वर्कस्टेशन पे मैंने vCenter सर्वर ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। ओके, एनी काइंड ऑफ एरर? इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट भी हो जाता है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। 2 बार मैंने ट्राई की। ESXi में इजीली इंस्टॉल हो जाता है। Intel's SD। एक क्वेश्चन था। डिफॉल्ट TCP/IP स्टैक के सेटिंग में एक ऑप्शन है, एडवांस सेटिंग में कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम न्यू रेनो करके कुछ ऑप्शन है। न्यू रेनो और क्यूबिक के ऐसे कुछ 2 ऑप्शन है। ओके, आई नीड टू चेक, एक बार मैं देख लेता हूँ उसको क्या है। ओके। ओके, I'm able to use the shortcut keys, so let me connect my Windows machine क्योंकि ये वर्कस्टेशन पे है ना। हम्म।
installation is in progress. So once we install, we will connect with the help of our vCenter server machine, or then try to configure the backup. Try to configure the clone and clone template एक clone सिस्टम से दूसरे सिस्टम इसको मूव कराने की कोशिश करते हैं. ठीक है. 1.11. I'm just going to add the same ESXi to our vCenter server. Again, just need to right click. Okay. We are unable to access it क्योंकि ये domain का member नहीं है, right? not 11. Windows system 32 drivers. See. vcsa.7 class.com is successfully configured it. आगे लेकिन हैजमार्क है ना, Sorry? आगे हैजमार्क था ना, पाउंड साइन था ना. हाँ हाँ. Actually, I'm unable to operate server. ये mouse का cursor move कर रहा है बार बार. Let me disconnect and connect again.
Okay, let me connect another ESXi host that we just installed. Add host पे जाते हैं. अभी जो हमने ESXi इंस्टॉल किया contain 11. 1.11. Next. Both ESXi contain local storage, right? Local Mm. data store. ESXi 11 and ESXi 15. I'm just going to create a clone. ठीक है, यहाँ पे Windows 10 का clone तैयार करते हैं. Right click on virtual machine, go to the clone to the virtual machine. Type the name of virtual machine, so clone VM. ठीक है, same DC. I wanted to put it into the 11 क्योंकि ये 15 में तो है Mm. ही है. हम इसको Mm. दूसरे 11. ESXi में. अब देखो कहीं पे भी आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, कोई भी ESXi सेलेक्ट कर रहे हो, कोई एरर नहीं आ रहा है. कंपैटिबिलिटी चेक सक्सीडेड. ऐसा क्यों? Due to version. नो सी वर्जन तो अलग रहता है, बट अगर आप इस एक वर्चुअल मशीन ऑलरेडी एक ESXi में लोकल स्टोरेज पे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, तो दूसरे ESXi में दूसरे के लोकल स्टोरेज में कैसे जाएगा फिर? Mm. Okay, let me move it and show you the step. Reason, get you about the reason. So next किया हमने, next किया. Again we need to provide the Storage. Destination storage के लिए. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, ये एक्सरसाइज 6.7 के बाद से, ठीक है ना, Mm. ये Mm. एक्सरसाइज 6.7 के बाद से आपको केवल एक ही हार्ड डिस्क मिलती है. जब आप अपना ये एक्सरसाइज नया सेटअप करते हैं ना, यू विल गेट ओनली सिंगल हार्ड डिस्क दैट कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ Operating अवर ये system. एक्सरसाइज. Yeah. जब आपको वीएम क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको एक नया स्टोरेज ऐड करना पड़ेगा अलग से. इज दैट करेक्ट? Yes. Data store add करना पड़ेगा, right? डेटा स्टोर ऐड करना पड़ेगा. जो देन वी free आर एबल टू space है. फाइंड. Yeah. अभी ये ब्लैंक है, देखो आप स्टोरेज में देखो, जीरो दिखाई पड़ रहा है. we don't have any storage. So back Yeah. to the ESXi. यहाँ पे vCenter सर्वर, सॉरी, ESXi 15, ESXi 2. यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, वर्क स्टेशन से ऐड कर लेते हैं इसको. Disk add करना पड़ेगा. I'm going to proceed with 80 gig of hard drive. Next, yeah, next year. Apply. Required to restart.
ठीक है, लेट मी कनेक्ट आवर ESXi host again. वैसे तो connected ही है because we just restarted. Try to create a clone. One dot one one next. Still we are unable to find the storage. We need to add, na? We need to add data store over there, na? Sorry. Yeah, we just add the hard drive. हाँ जी, yes. तो आपका ऑफिस टाइमिंग क्या है? 6 to 3. 6 to 3. 3 a.m. IST. ठीक है, now we are able to find the storage. यहाँ पे हमने सेट किया, everything is okay. Next, I don't want to customize it, और we don't have a virtual machine, तो I don't think it will take much time. Immediately ये तैयार हो जाएगा. ठीक है, is that okay? Yeah. Now question, why we are able to create a virtual machine and put it into the another ESXi host although we are using local storage? So what happen जब आप virtual machine का clone बना करके किसी ESXi को assign करते हो ना, तो the entire hard drive, the entire virtual hard disk will create on that particular storage. Yeah. We are not migrating, think about it, we are not migrating. जब आप माइग्रेट करते हैं तो उस केस में आपकी स्टोरेज जाना जरूरी होता है. इज दैट करेक्ट? Yes. यहाँ पे हम क्लोन बना रहे हैं, उसी मशीन को किसी दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बेस. उसकी हार्ड डिस्क भी वहीं पे है, उस वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन भी वही है, बट ये दोनों वर्चुअल मशीन एक साथ नेटवर्क में तब तक नहीं आ पाएंगी जब तक आप इस पे sysprop कमांड नहीं रन कर देते. Mm. इज दैट ओके? Yeah. This is the actual concept of means cloning, Only. or we know that we have option to configure the templates as well. Then यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? No. ठीक है, so our setup is ready to use, means सारी एक्टिविटी हम फटाफट से परफॉर्म कर लेंगे. So can we do it tomorrow because I have a one call at 12 a.m. Okay. No worry. in next 10 minutes. तो आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना जो भी टास्क है, and Yeah. we'll connect, we'll discuss tomorrow, we'll discuss about the template and clone and library, and also Mm. vMotion as vMotion, ये दो पॉइंट कवर करेंगे. ठीक है, Okay. Yeah. ओके, थैंक यू. Thank you. Thank you.